And when we said that the role of the financial manager in the firm has evolved, we were talking about the movement from the traditional role to the modern role. Traditional was looking for sources of finance, raising of funds, while modern was efficient utilization of the funds raised. So let us first explore what are the various sources of finance which are available to a firm. So the basis on which you can classify the sources first and foremost is on the basis of time period involved. So in that you have long term sources of finance, medium term sources, and then short term sources of finance. Under long term sources, the most popular sources of finance are equity shares, preference shares, debentures, long term loans, and fixed deposits. So, we'll not be discussing the medium term in detail because medium term is, say, if I talk about a public deposit of 1 year, it becomes a short term source. Any source of finance between a time period more than 1 year to less than 5 years is your medium term source of finance, and then above 5 years would be a long term source. So, debentures which are issued for 3 years or public deposit for 2 years, that become medium sources of finance, which we are discussing separately under short term also and long term also. So let us just understand the meaning of each of the sources of finance, starting with the shares as a long term source of finance. But before that, let us see how are the sources classified on other bases. Other bases can be ownership, जिसमें आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, that become your ownership capital, while debentures, loans, they are part of the borrowed capital. Then on the basis of sources of generation means whether you are approaching third party or external sources to raise funds like shares के लिए, debentures के लिए, आप public at large को issue कर रहे हो shares, या आप से private placement कर रहे हो. Private placement क्या होती है? When instead of going to public, the company tries to raise funds by issue of shares to some big financial institutions and banks. तो ऐसे करके आप external sources कर सकते हो. Internal sources क्या होते हैं? जो funds firm ने जोड़े हैं over the years, it has saved over the years, so that can be your retained earnings, your surplus, or any depreciation reserve that has been formed by the firm. So let us start with equity shares. Now, all of you, most of you are commerce students. So I would like you people to explain me what is the difference between equity and preference shares. Then we'll move to detailed explanation. Yes, anyone? Ma'am, in preference shares, they get preference while giving dividend. Yes, good. Yes, apart from this, what is the difference? Ma'am, even if the company is in the position of shutdown, Yes. then जब जो preference shareholders हैं उनको preference ज़्यादा मिलेगी instead of the equity shareholders. Yes, good. So, literal meaning ही क्या है preference shares का? That they are getting preference and preference over the equity shareholders. Okay. So while for equity shareholders the dividend is not fixed, for preference shareholders the rate of dividend that they will be receiving every year is fixed. What we know by this time is that dividend is the return earnings for the shareholders, while interest is the earning for the debenture holder.
Now, at the time of declaration of dividend, preference shareholders get preferential treatment over the equity shareholders, and same is the case at the time of winding up of the company also. The claims of preference shareholders are settled before the claims of the equity shareholders. Then what is the benefit with equity shareholders? Why would anyone go for purchase of equity shares? One, they have voting rights. They participate in the management of the company. Second, they have a chance of earning above average profits. तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उनको जो रिटर्न मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड will be much higher, is expected to be higher than the preference shareholders. Okay, coming to the features again, most of the features all of you know. Maturity कुछ नहीं होती. Equity shares are lifelong source of finance for the firm. Okay, now in between, if the firm has say surplus funds, many firms go for buyback of shares from the market. What do you mean by buyback of shares? Yes, anyone? Buyback के बारे में सुना है आपने? Buyback of shares? The firm will again buy the shares from or get return the shares from Why would a firm do that, Vignesh? Can you think of a reason? Or anyone? Yes, Vignesh, you want to answer? they might feel that that is excess of capital, like excess of voting power is there with them shareholders. Okay. Yes. Any other reason anyone can think of? Yes, Chirag. To take control. Yes, that is the main purpose. Now, if the firm is having surplus cash, it will try to take back the control from the market. So they start buying back the shares. Now, obviously, if they have to buy back the shares, it is totally optional for the shareholder whether or not to sell those shares. तो कंपनी क्या करती है, आपको जो प्राइस कोट करती है बायबैक का, वो मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है. Okay, only then will the shareholder be actually interested in returning back the shares to the company. Okay, so तब आप कह सकते हो कि at the discretion of the company the shares have been bought back. Otherwise, equity shares do not carry any validity period. So there is no maturity period. They are lifelong source of finance for the firm. After that, second point is residual claim on income. So first and foremost, the creditors, the debenture holders, their claims are settled. जो आपने लोन लिया हुआ है उस पे आप इंटरेस्ट पे करते हो. उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, और लास्ट में if something is left and if the company wants, then equity shareholders receive dividend. Otherwise, if the company wants, it can retain the earnings with itself also. Similarly, equity shareholders have residual claim on the assets of the company. So at the time of winding up of the company also, the last claim on the assets is of the equity shareholders, but everything is compensated by the voting rights they get at the time of voting, general meetings of the company. The next point you see is preemptive right. Have you heard about rights issue? Say a company is issuing rights in the ratio 1:1. What does this mean?
Ma'am, the company offers additional new shares. Yes. At, 2. हम्म, ma'am, in order to raise funds, ठीक है, किसको ऑफर कर रही है न्यू शेयर्स? ma'am, existing shareholders जो होते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. So before going to the market, company approaches the existing shareholders with fresh shares. Okay. Now 1:1 का मतलब क्या हुआ? जिसके पास एक इक्विटी शेयर है, कंपनी उसको ऑप्शन दे रही है टू परचेज another equity share. Now this option is given to the existing shareholders at a price below the market price. ओके, बिकॉज उनकी पहली प्रेफरेंस क्या है कंपनी की, कि सेम लॉट हमारे पास रिटेन्ड रहे, सेम लोग ही हमारे शेयर होल्डर्स बने रहे, ताकि कोई आउटसाइडर कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर ना करे. Okay, so as to retain the same set of shareholders, company approaches the existing shareholders with a discounted price to purchase additional shares. This is known as rights issue. So this option is again given to the equity shareholders. And last is limited liability. So sole proprietorship जो होती है, उसमें बिजनेसमैन जो होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. मतलब ना सिर्फ प्रोफेशनल एसेट्स बट आपके पर्सनल एसेट से भी आपके डेट्स को सेटल करा जा सकता है. बट इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, the shareholder, equity shareholder has liability limited to the amount unpaid on the share. So you can see an example. If the shareholder purchased 100 shares, equity shareholder has purchased 100 shares with a face value of 10. He has paid only 900 till now. मतलब 10 रुपए की जगह अभी हर शेयर पे सिर्फ 9 रुपए पे करा है. Then his outstanding liability is only remaining 1 rupee on 100 shares, which makes the total amount as rupees 100. So company cannot ask, और से creditors of company, जिनको कंपनी से पैसा लेना है वापस, वो 100 रुपए से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते from the equity shareholders. So advantages we have covered in the points which we have discussed. Disadvantages, irredeemable है, कोई fixed time period नहीं है. Some set of equity shareholders might say collaborate with each other and collude with each other and create obstacles in the management of the company. Okay, speculation. What is speculation? What is speculation? शेयर मार्केट में ये टर्म यूज होती है. Is speculation same as investing? मैम नो, Yes. बेसिकली इट इज इन्वेस्टमेंट, लेकिन मतलब इसमें ये लगता है कि कोई प्रॉफिट होगा या कोई गेन होगा. प्रॉफिट नहीं हाँ. कह सकते उसको, गेन होगा, लेकिन लॉस का भी उतना ही रिस्क होता है. हाँ, बहुत हाई रिस्की प्रोपोजिशन होती है. बेसिकली आप ट्रेड करते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अबव एवरेज रिटर्न के लिए, और वो रिटर्न बहुत हाई रिस्क पे आता है. आप सिर्फ जो मार्केट में मूवमेंट्स चल रही हैं उस बेसिस पे आप रिस्क लेते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि इन फ्लक्चुएशन से आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा. सो जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ज्यादा होता है, रिस्क कैलकुलेटेड होता है. स्पेक्यूलेशन जब हम करते हैं, बहुत कम कम टाइम के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं विदाउट से प्रॉपर रिसर्च ऑफ द मार्केट. इन्वेस्टमेंट में हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं. तो जो मैंने आपको कैलकुलेशंस समझाई, जब आप सिक्योरिटी चूज कर रहे हो या पोर्टफोलियो बना रहे हो, वो सब आपकी कैलकुलेटेड रिस्क है. यू ओनली इन्वेस्ट व्हेन यू हैव डन ऑल दी होमवर्क. But speculation is taking a chance
say you are taking above average risk to get above average return. Then investors के लिए कोई fixed income नहीं है equity shares में, and a company which is dependent on 100% equity is not able to make advantage from the use of debt capital. So this is known as trading on equity. Have you heard this term? I think most of you are from commerce and economics. Any other course? Yes, Vasundhara, और कोई कोर्स से हैं स्टूडेंट्स हमारी क्लास में? Ma'am, I am from BMS. BMS वही कॉमर्स वाला ही बैकग्राउंड हो गया ना पारुल आपका भी? हाँ, मेरा भी बैकग्राउंड वैसे तो कॉमर्स है, बट आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी ऑनर्स. साइकोलॉजी. अच्छा, सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फिर आपने टर्म नहीं सुनी होगी? Yes, ma'am. Yeah. सुनी है. ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो डेट कैपिटल होता है, जो डिबेंचर्स होते हैं, पहली चीज उन पे इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, और दूसरा मैंने पहले भी समझाया था आपको कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है. मतलब पहले आप इंटरेस्ट पे करते हो. But I'll draw here the format again, just in case you people have forgotten. Earnings before interest and taxes, ये आपकी आती हैं revenue minus cost. सबसे पहले हमने इंटरेस्ट पे करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसके बाद हमने टैक्स पे करा. तो इंटरेस्ट की वजह से आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है, एंड सब्सिक्वेंटली योर टैक्स पेमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस. दिस इज नोन एज बेनिफिट ऑफ interest being tax deductible. Okay, first thing that needs to be clear is this, that interest is tax deductible. Okay, now if a company is using 100% equity, it is not able to reduce its taxable income. So some proportion of debt is very important in the capital structure. But obviously debt also has a risk. आगे हम करेंगे अभी डेट कैपिटल भी, कि डेट अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हो, you can be taken to court and the court can ultimately order the winding up of the company also. So in that sense, interest can be risky, debt can be risky, but this advantage of using interest, using debt capital to increase the income of the equity shareholders, क्योंकि इसके बाद टैक्स कम पे कर रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, तो ज्यादा डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. दिस बेनिफिट इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. सो इफ देयर इज नो डेट, 100% इक्विटी होगी, तो फिर आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. This can be one of the disadvantages of use of 100% equity shares. Any question in this? Okay, let's move then to preference shares. जब हमने इक्विटी डिस्कस कर लिया, प्रेफरेंस हमारा साथ में ही डिस्कस हो गया है, बट there are some classifications. Cumulative preference shares, cumulative होता है एडिशन करना. तो अगर आपके preference shares cumulative हैं, इसका मतलब क्या है? Say for example, in a particular year, firm is having losses and it cannot pay the preference dividend. Then this amount will be added to the dividend payment in the next year. Those such preference shares are known as cumulative. Otherwise, they are non-cumulative preference shares.
Then redeemable and irredeemable, again literal meaning. Redeemable जिनका लाइफ टाइम फिक्स्ड है, ड्यूरेशन फिक्स्ड है, 5-10 सालों के लिए आप कंपनी इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स, but if there is no time period specified then they are irredeemable. Participating, non-participating. Participating preference shares, if it is mentioned at the time of issue, they can get extra dividend over and above the fixed dividend that is being paid to them. Otherwise, they are non-participating preference shares. उसके बाद convertible preference shares भी कंपनी इशू कर सकती है, जिसमें कुछ टाइम के बाद the shareholder is given the option of getting the preference shares converted to equity shares. Okay, features, maturity period is not defined or is defined depending on the nature of preference shares. Then claim on income and assets is prior to the equity shareholders, but no voting rights. Advantages, जो टाइप्स करे हैं, जो फीचर्स करी हैं, उससे एडवांटेजेस आ गए प्रेफरेंस शेयर्स के. एंड द डिसएडवांटेजेस, if there is any point which needs further explanation, you can ask me. Equity, सॉरी, डेट पे इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, पर जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से मिलता है. Okay, let's move to debentures. So debt, capital, any acknowledgement of debt through the issue of instruments is debenture. It is known as IOU. IOU is that the company owes money to the debt holders. So interest is paid at regular intervals, and then at the end of the duration of debt, the principal amount is repaid back to the debt holder. Debentures can be of different types. First categorization is on the basis of the mortgage or security against the debentures. So debentures which are backed by the assets of the company are secured debentures. Otherwise, you have unsecured debentures. Redeemable, irredeemable, time period जिनका फिक्स्ड है. Convertible, जो shares में convert हो सकते हैं, those become convertible debentures. Okay, features. So claim in income and assets is even before the preference shareholders. First claim debenture holders का बनता है, वो भी जो secured होते हैं. No voting rights, that becomes a disadvantage also. Biggest advantage, that there is income tax deduction on the interest paid by the company. So these are the disadvantages for debenture holders. In spite of whatever be the earning capacity of the company, the debt holders always get a fixed interest. After that, next source of finance, internal source of finance for the firm is retained earnings. They are that part of profits which have not been distributed as dividend but have been retained by the firm. So why would a company retain profits? Because for further production, further investment, expansion, firm will need funds, and these are the most economical sources of finance for the firm. Then there's no fixed obligation. Retained earnings के against company को कुछ भी return नहीं देना पड़ता explicitly.
बट फैक्ट इज कि अगर कंपनी रिटेन कर रही है अर्निंग्स, तो जो एक्सपेक्टेशन होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें ये लगता है कि कंपनी ने अब हमें डिविडेंड नहीं दिया, खुद पैसा अपने पास रखा है, तो कंपनी ये पैसा हमें डबल ट्रिपल करके आगे वापस करेगी। So they are expecting more appreciation in the price of share and higher dividend in the future. Disadvantage of retained earnings, they can be misused by the management. Excessive use can lead to monopolistic attitude. Monopolistic attitude का मतलब ये हुआ कि कंपनी सिर्फ अगर रिटेन्ड अर्निंग्स पे डिपेंड करती है तो बहुत बारी वो बेटर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी मिस कर देती है। And it can lead to tax evasion by the company also. After that, you have commercial banks which can give you short-term loans and advances against security. विदाउट सिक्योरिटी भी एडवांस का बैंक आपको दे सकता है डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री, और अगेंस्ट दी सिक्योरिटी गिवन बाय यू शॉर्ट टर्म एडवांसेस मिल सकते हैं या लोन भी मिल सकता है। लोन इज अगेंस्ट अ सिक्योरिटी। देन लोन कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, बोरो कर सकते हो आप मनी फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी, और करंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है वेयर दे कैन विड्रॉ मोर मनी देन व्हाट इज देयर इन देयर अकाउंट। एंड लास्ट सोर्स वुड बी पब्लिक डिपॉजिट। अगेन लिटरल मीनिंग, पब्लिक से जब कंपनी पैसा रेज करती है, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट। प्रॉपरली स्पेसिफाइड होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं पब्लिक डिपॉजिट, एंड ऑल्सो दे आर अनसिक्योर्ड। तो डिबेंचर्स की ही तरह आप पब्लिक डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो और एक टाइम पीरियड के बाद वो अमाउंट वापस कर रहे हो, बट डिबेंचर्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी हो सकती है, पब्लिक डिपॉजिट पर कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। There is no dilution of control also because there are no voting rights. But this is a very short-term source of finance for the firm. Okay, so with this, the first unit of your syllabus is over.